मंजूरी देंगे? बोलिए, प्लीज टेक द माइक, प्लीज गो अहेड। बच्चे बड़ों की बातों में मदाखलत नहीं करना चाहिए। अभी कितना भी बोलो बच्चे हैं, अभी बहुत सीखना है, सीखिएगा। अरे हम 7 सीट पर हैं, लेकिन आपको 7 भी बर्दाश्त नहीं। हम अकेले यहां खड़े होते हैं, यह भी बर्दाश्त नहीं। आपका ये इंटॉलरेंस जो है ना, ये बता रहा है, ये पैगाम दे रहा है कि मुसलमानों से आपको गुस्सा है। क्या मैं मुसलमान हूं तो क्या यहां खड़े होकर अपने मसाइल को पेश नहीं कर सकता हूं? क्या यह मेरा हक नहीं है? आई रिक्वेस्ट माय लर्न्ड फ्रेंड के जरिए हुकूमत से एक मुतालबा करना चाहता हूं कि पुराने शहर में बहुत जगहों पे तार लटक रहे हैं और लटकते हुए तारों को ऊंचा करने के लिए एक 500 पोल्स की जरूरत है पूरे पुराने शहर में। अगर आप मंजूरी देते हैं तो मैं आपका ममनून रहूंगा, मशकूर रहूंगा। नए ट्रांसफार्मर्स होना है और बहुत सारी जगहों पर 3 फेज नहीं है। ओल्ड सिटी में 3 फेज के लिए हम बोल रहे हैं, थर्ड फेज देना है। उम्मीद करते हैं कि आप उसको भी मंजूरी देंगे। बोलिए, प्लीज टेक द माइक, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। Akbaruddin sir. For the last 10 years, he's the senior most legislator here, but he's telling that so many 500 polls he required. He never bothered to ask the previous government why he has done. He's giving the lecture so many times as if he is the master voice. Then why he has not asked all those? Yes, 10 years was given the time for them. He has not demanded anything for the old city. Please. Akbaruddin sir. ऑनरेबल स्पीकर सर, बच्चे बड़ों की बातों में मदाखलत नहीं करना चाहिए। अभी कितना भी बोलो बच्चे हैं, अभी बहुत सीखना है, सीखिएगा। असेंबली के रिकॉर्ड्स निकाल कर देखिएगा, हम बार बार मुतालबा करते गए हैं। इफ यू आर गोइंग टू गिव मी द टाइम सर, आई विल मेंशन ऑन द 10 years अचीवमेंट्स ऑफ ओल्ड सिटी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इन ओल्ड सिटी we were successful in getting sanctioned works worth 14,500 crores. And that information was laid on the table. And if you have to calculate, the works which are sanctioned is more than 25,000 crores. As far as this electricity is concerned, we were successful in getting a sanction of many electrical substations. You mean to say कि I shouldn't say? आपको जरा अकल होनी चाहिए कि कोई वायर डालते हैं सर, like I want to give an example कि a wire is being given sir, Please. It takes sir every 5 years it is required to replace those wires. So I will have to, as a public representative, I'll have to make my demand. I'll have to put across. That doesn't mean कि I am going to be quiet. Sir, it is the government, and the government is a continuous process. So I am going to make a demand, I am going to make a request, I am going to ask. You want to give or you don't want to give, it is your prerogative. But my responsibility is to demand, to make a request to the government. Government has the responsibility to take care of everybody. And I am making this demand on the assurance given by the Honorable Chief Minister that he is not going to take any पुराने शहर के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे, बोले आप कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन आपके लेजिस्लेचर्स के साथ ऐसा दिखता है कि आप इंतकामी कार्रवाई करना चाह रहे हैं। सर, आई हैव टू रिप्लाई टू दिस सर। सर, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को तो हिंदुस्तान भर में इख्तिदार है और मौका है। 16 चीफ मिनिस्टर आए रियासत तेलंगाना में, 119 सीट हैं, हिंदुस्तान के 500 पार्लियामेंट के सीट्स हैं, रियासतें हैं, लेकिन उनका मकसद यही है कि मुसलमानों की एक पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उसको खत्म कर दो। उनका मकसद है कि रियासत में जो रीजनल पार्टीज हैं उनको खत्म कर दें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको क्या बड़ा नुकसान होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। अरे हम 7 सीट पर हैं, लेकिन आपको 7 भी बर्दाश्त नहीं। हम अकेले यहां खड़े होते हैं, यह भी बर्दाश्त नहीं। आपका ये इंटॉलरेंस जो है ना, ये बता रहा है, ये पैगाम दे रहा है कि मुसलमानों से आपको गुस्सा है।
क्या मैं मुसलमान हूं तो क्या यहां खड़े होकर अपने मसाइल को पेश नहीं कर सकता हूं? क्या ये मेरा हक नहीं I है? request my learned friend Akbaruddin Owaisi साहब, you know, हमारा जो MLA साहब बात करे, he was just asking, basically the demand is there. He was just telling about the inefficiency of the TRS government, which they didn't do. He was not criticizing the MIM and all. No, 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 no. एक minute. About me, and he said he is a senior member and he failed. No, no, no. He didn't. No, no. He didn't say fail. Mr. Gentleman, I would like to say I haven't failed. No, no, no. Akbar bhai. No, 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 no. He was. No, no. No, 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 no. Sir. नहीं ओवैसी अब साहब। अरे एक ओवैसी मिनट साहब। रुको भाई, एक मिनट रुको और कौन साहब, ओवैसी स्पीकर साहब। सर, ओवैसी साहब, ओवैसी साहब, ओवैसी साहब, प्लीज। No, if any member diverts, sir, gets diverted, basically, you know, it's only all the emotional issues which comes into being. So our member was just asking and questioning the TRS government, which they didn't do it. This is his context and this is his objective. It would have gone in, it would have taken in a wrong way. And I would like to request Honorable Speaker to expunge the words what Akbaruddin Owaisi has said about the new member. What the new member, like अकल का कुछ ऐसा नहीं ठीक है भाई नहीं I'm not we are not here, we are here on a positive note, sir what Please. sir my point here is, you know, he has seen many assemblies. No, that's fine, you know, we take everything in a very positive way. खबरदार इन उर्दू बोले तो, खबर बोले तो न्यूज इन्फॉर्मेशन, खबरदार इज नथिंग विच इज अनपार्लियामेंट्री. केटीआर गारू, प्लीज 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 सर, सबमिट. whatever you please examine the record, sir. Please examine the records. Whatever is unparliamentary, you can expunge it, sir. Sir, I request the honorable member also, please. He is a new member. He is a new member of the assembly. No. नहीं किससे भी मैं सर डरना डराना हमारा फर्ज बनता नहीं होता साहब. We are all the new members, sir. There are 51 new members in the assembly, sir. प्लीज सर देखिए सर एक there are 51. प्लीज मिनिस्टर का बात हो गया, बाद आपको देंगे, प्लीज. There are 51 new honorable members in this assembly, sir. 57. So we have to respect each and every honorable member, even though they got elected for first time or 2 times or 3 times or 4 times. My request to honorable member is, don't get into the total intricacies what they speak. They have just come to assembly, they were trying to express their opinions, try to understand it on the broader thing. You know, you have to accommodate everybody and try to go along with it. రికార్డును పరిశీలించి Sir. నిర్ణయం తీసుకుంటాను. అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ సాబ్ సబ్జెక్ట్ ऊपर मैं सब्जेक्ट पर ही छू सर, बट बिफोर गोइंग ऑन द सब्जेक्ट सर, फर्स्ट आई एम गोइंग टू मेंशन द डिटेल्स ऑफ द वर्क विच वाज क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट आई विल कम ऑन माय सब्जेक्ट सर. फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 और बोलूं सर, we देख ऑनरेबल स्पीकर सर, नो सर, वेट सर, प्लीज वेट सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर. मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर हम काम नहीं कराते होते तो बार बार जीत कर नहीं आते. 6 मरतबा जीत कर आया हूं और लोग यहां से यहां जाते, वहां से वहां आते, लेकिन हम जहां वहीं खड़े हुए हैं. मंसूबे बनाए, साजिश बनाए, हम बुरे दिखे, मुसलमानों की एक आवाज को दबाने की कोशिश करी वो कांग्रेस ने, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों ने अपने एतमाद का इजहार हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे किया और हम कामयाब होकर आए हैं, कामयाब होकर आते रहेंगे. लेट मी मेक इट वन मोर थिंग क्लियर सर, आई हैव कम
with a majority of 81,000 change votes, and I have secured 67,000 poll votes. मतलब ये कि आवाम का भरोसा हमारे साथ है. आप अगर समझते हैं कि आपको इख्तिदार मिल गया 10 बरस के बाद, तो आप हमको डराएंगे. हम डरेंगे. हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है. हम मुकाबला करते आए हैं, मुकाबला करते रहेंगे. किरण कुमार रेड्डी ने जेल में डाला, हम जेल में रहे. हमको भेज दिया शहर से, हम उस वक्त भी नहीं डरे. अरे हम डरने घबराने वाले नहीं है. मैं 5 मर्तबा जेल में जाके आ चुका हूं, और भी जाना है तो जाएंगे. आप तसादुम चाहते हैं, ठीक है, हम करने तैयार हैं. हम गले लगाने को भी तैयार हैं, लेकिन याद रखो, हमारे हाथ दराज हैं. हम इख्तिदार के गिरेबानों को खेल सकते हैं. हम अपने दामन के तार बेचने को तैयार नहीं है. हम तैयार नहीं है. अगर आप समझ रहे हैं कि इख्तिदार है, तो हम डर जाएंगे और उठकर हमको डिस्टर्ब करेंगे. नहीं, मुसलमानों की आवाज तेलंगाना में थी, है और रहेगी. इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता. यह आवाज पूरे आब वो ताप के साथ थी और आब वो ताप के साथ ही रहेगी. हम मसाइल के लिए जिद्दोजहद करते रहे हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे. हमारी जिद्दोजहद चंद्रबाबू नायडू के दौर में भी थी. हमारी जिद्दोजहद, आई एम कंक्लूडिंग सर, हमारी जिद्दोजहद किरण कुमार रेड्डी के दौर में. सीएम साहब बात करें. स्पीकर सर, एक नया मेंबर